Okay, so good morning, ma'am. Good morning, dear. So, shall I start? Yes, please. Let us start. So, good morning, everyone present here. Today's day is going to be the most knowledgeable day. So, I, Priyanshi Joshi, welcomes you to the wonderful event along with my co-host Krishna Makhan. So, the event is all about pros and cons of corporate world. The speakers speak to be furnished by Ankita Sharma ma'am. We are at a stage of life where we are to start our career and to enter the corporate world. So believe you can and you are almost there. So thought process plays an important role. So we have an interesting video to this to this event. So shall we have the video, please? Yes, please. All must be eagerly waiting for it to start the program with such a wonderful video. Yes? Yes. The mind rambles. You understand? You are sitting here in the middle of your work day. All of you have come here obviously because you want to learn something. And you've come here from your busy schedule to learn something. Your own mind won't let you do that. So you're sitting here looking at me and the mind will go, oh, at 3 o'clock, where do I have to go? What is the meeting? Anxiety about the future. Or you are worried about what happened in the past. Last time when we had this meeting, I didn't make a good impression. This time, you understand? So all the time, your mind is either rambling in worries of the past or anxieties for the future. This destroys your peace and productivity. See, I speak to CEOs often on these corporate seminars, and I ask them, because you look up to these people as successful. And I say, you guys are in the office 9 hours a day. How long are you actually working? What do you think they say? Or you tell me what you think you do. And even if your boss is here, don't worry. You understand? Because he's in the same position. So don't worry about it. See, what I mean is, once you understand your mind is always rambling in the past and the future, what do you think? Suppose you're in the office 9 hours. How much are you actually in the present focusing on that work of that time? How much do you think? Less than an hour. You don't have to be that humble. How can you work there? Your boss is not here, no? Focusing on at that moment what you're supposed to be doing. Whatever you've been wanting to do. See, like over here, you've come here wanting to listen to this. Right now your work is to listen to what I'm saying. Your own mind won't let you. It will go and I told you, next meeting or previous meeting or what happened, what will happen. So what do you think in the whole day? What do you think it is? He says an hour, okay. 3 hours, okay. Anybody else? 6 hours. 6 hours is fab. You must be a big shot. See, most people, the general consensus anywhere all over the world is between 30 and 40%. Do you know what that means? You have no idea of the implication of that. What should take you 3 hours or 4 hours to do actually takes you 10 hours. And that's why you keep saying the whole world, this is the problem, I don't have time. I don't have time. It's not you don't have time. You don't have an intellect to keep your mind in the present. If you could do that, you'd have all the time in the world. And not only does this rambling tendency of your mind destroy your productivity, this is what causes you to be tired all the time and fatigued. That's why at the end of the day you need a drink. At the end of the week you need a weekend. Today's Friday, right? Everybody have a great weekend, have a great... Why doesn't anybody say on Monday, have a great week? They'll put him in asylum over here. I really want to start that. Monday morning, have a great week. This guy's crazy, man. At the end of the year, you need a vacation. That's all you look forward to.
So you are looking forward to getting away from what you do for enjoyment. What a sad life. Trying to get away from things to enjoy. Why? Because you're tired. Why are you tired? It's not because of your work. I'll prove it to you. Anybody here have a young kid, 3, 4, 5, 6 years old? Anyone? No? All thinking, huh? Not to have children. Good, intellect. So, see, what I mean is, a guy, father comes home from work, he's got a young kid, and the kid is jumping all over him. Dad, how are you? How is this? And he's like, okay, relax. I'm tired, man. I'm tired. And what did you do all day that you're so tired? Huh? You drove to work in your air-conditioned car. You went to your air-conditioned office. You had a few meetings. You had a nice lunch. Sipped a few cups of coffee. And then drove home in your air-conditioned car. And then you come home. I'm so tired, man. Oh, what a day. And your son who's been jumping, kicking, dancing, running around all day. He's so full of energy, right? Why is that? Physically, you have far more strength than him. You can pick him up and toss him around. There's no comparison. And yet you are tired when he's so energetic. Because children have no worries of the past, no anxiety for the future. That's why they have boundless energy. Only adults feel tired. It's not your work. It's your inability to keep your mind in the present. That's what fatigues you. Worries and anxieties. It destroys your peace. It destroys your productivity. It destroys your energy. The first So it was a great video. Wonderful one. Very exemplary at this juncture of stage. All of you, what do you think? Yes? Yes. So let us welcome our speaker of the event, who don't need any introduction and known among all of us. She has 9 years of corporate experience and the best person to share the knowledge about corporate and the work culture. She is one of our BK faculty and she is Ankita Sharma ma'am. So thank you ma'am for joining us on this event and sharing your valuable time with us. Thanks all of you. The best thing I feel is being around all of you people always, and really whosoever come and meet us in the college, I always tell that we miss you a lot. When you are with us, we feel the best of it. No doubt, we do a lot of masti in the class. Sometimes people are talking for no reason, but still that is also missed by us, all the faculties, when we are in the college without you people, because we have to wait for you till August, yes? And about this topic, this is about the work culture in the organization. What I feel is we need to understand first what is culture. That is very important. भूलिए वर्क कल्चर भूल जाइए पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए what is culture, why it is there, right, around us, and then we can think of the work culture which is there existing in the organization. Now that organization mostly wherever you join is existing one, right, and you are the new person to them. So how to behave in that culture, I have made a little small PPT that I don't want to bore you people, but yes, it will give you insight how to behave in the organization. I have made a PPT which consists of two parts. First is what organization is expecting from you, and second is what employee is expecting from the organization. Both sides I have included so that ऐसा कहते हैं ना कि एक ही पहलू देख के समझना मुश्किल होता है. So let us understand both the sides and then we can interpret, and all your question answers are invited, right? So please, Rahul, if you can share the PPT right now.
Rahul, are you sharing or should I share this PPTs? Yes, ma'am. Agam is sharing in a minute. Okay, fine. Please take your time. Is it ma'am available? Please, next slide, please. Any problem in sharing the slide, Rahul? Just a minute, ma'am. Okay, no problem. Okay, so I have not made much of theoretical slides. Very few are there with these theories. But yes, I feel first of all we should know what culture is all about. Now, can you tell me what according to you culture is? Anybody, students? Yes? Anyone? Yes, please, Kautilya. So ma'am, what culture is according to me, it is the way of how people behave there, work there, what are the formalities going on in day-to-day life, how do people greet their each other, what are the common hobbies of the workplace, uh, those are the cultures followed by the workplaces. Very nice. And from where do we learn by those by by cultures? just Anybody? involving there, by just being there. Yes. Okay. Okay. Now let us From understand. society. Yes, please. Yashika. From society. Yashika, do you want to say something? Yes, I was saying that from society we learn all these things. Okay. From society we learn all this. Okay. Very simple and a correct answer too. Anybody else want to contribute something on it? Ma'am, वहाँ के rules and regulations follow करना. Yes. Yes. Okay. Very nice. Anything else? Yes, Dia. Can you please speak aloud? Ma'am, if I say like if I describe culture with an example, then I would say as there is a company where we maintain a culture like a health environment. We try to Yes. keep people fresh Healthy. and healthy by Hmm. giving them Yes. supplements or motivating them. So that's their culture. Hmm. So it's depend on culture, people to people कि वो कैसे क्या maintain करते हैं, उनकी beliefs क्या है, values क्या है. Absolutely. Wonderful answers by all of you. Now, first of all, forget about companies, forget about work culture. Let us understand one thing that what culture is all about. Okay, so it is about living a life with some belief systems which are given by our forefathers, and it is a generation which is learning from one to another and another to the next coming. So that are from the generation to generation we are learning various things. The culture has been a way of life
how an entire society live into it, right? तो उनका कल्चर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, उनका लैंग्वेज अलग होगा, उनका रिलीजन अलग होगा, उनके रिचुअल्स अलग होंगे, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, राइट? सो ऑल दैट इज नोन एज कल्चर. सो अगर आप हमारे ही देश में देखें तो हमारे यहाँ पे कहा जाता है कोस कोस पे बदले पानी, कोस कोस पे भाषा, है ना? तो बार बार अलग अलग जगहों पे भाषा बदलती है, लोगों का लहजा बदल जाता है, बात करने का तरीका अलग होता है, ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट होता है, लोगों का लैंग्वेज, हिंदी भी बोल रहे हैं तो भी वो डिफरेंट होगा. अगर साउथ इंडियन हिंदी बोल रहे हैं तो वो अलग होगा, एक गुजराती हिंदी बोल रहे हैं तो वो अलग होगा, लखनऊ अवध की साइड के लोग हिंदी बोल रहे हैं वो अलग होगा. सेम लैंग्वेज बट दे आर यू नो द वे ऑफ स्पीकिंग माइट बी लिटिल डिफरेंट. सो it is about, you know, the dressing sense, the language and everything, right? No doubt we have adopted that Western culture, right? But to an extent when it comes to the festival like Diwali, Holi, Uttarayan, right? So we make sure that we are celebrating them and with those dress cultures and everything. So it is very different, right? अगर आप असम के लोग देखें तो असमी they wear some specific type of sari, some specific type of dressing senses there compared to Punjabis, compared to Kashmiris. All together they are very different compared to South Indians, right? तो सबका अलग अलग culture होता है, अलग अलग जीवन शैली होती है. So this is all about his culture which we are getting from the legacy. From the generation to generation we are getting this, and it is your responsibility, dear students, to preserve that culture and give it to your coming fourth generation. Yes, next slide please. I hope this slide is clear. Now comes the corporate culture. अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैसा होना चाहिए. So corporate culture refers to the belief and behavior that determine how a company's employee and management interact with each other, or the employees interact with the outside people, right? You may have some client, you may have some suppliers, you may have some bankers, many people, you may be connected to them while you are doing your business. So how do you, you know, reflect your culture or what your culture is all about? So it is actually, you know, it is not expressed, defined. आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आप गए थे तो कि ये हमारा कल्चर है, ऐसे बात नहीं होती है. That is little bit different. You need to understand, you need to feel around you how the people are, what is the culture or around, and accordingly you adjust yourself, right? So over the period of time we adjust with those value system and the vision and mission of an organization, and overall we contribute ourselves to the culture of any organization. Okay, next slide please. So, जैसा कि हमने बोला कि नॉर्मल कल्चर की बात करें तो ड्रेस कोड और सब रिफ्लेक्ट करता है. सिमिलरली इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड द कल्चर बाय द ड्रेस कोड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द बिजनेस आवर्स, कितना बिजनेस वर्किंग आवर है, कितने दिन ऑफिशियल वर्क करना पड़ता है, व्हाट आर द ऑफिस सेटअप, राइट, व्हाट आर द एम्प्लॉय बेनिफिट्स, द फ्रिंज बेनिफिट which organization is providing, right? The turnover rate. What do you mean by the turnover rate? Anybody? Yes, students. मैम कितने हायर हुए और कितने लेफ्ट हुए कंपनी में से? Very nice, very nice. आदम बहुत अच्छे से HR की क्लासेस अटेंड की है. So turnover means कि कितने लोग आए और कितने लोग चले गए. Mainly turnover means कि कितने लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं. Right, so the turnover is higher when the dissatisfaction level in the employee is higher. अगर आप dissatisfied हैं, ठीक है, आपको कंपनी ठीक ठाक नहीं लग रही है, आपके अकॉर्डिंग नहीं लग रही है, you try to leave that organization, you try to join another one, so the turnover rate will increase. So it is very important. मैं आपको HR की शुरुआत से ये बोल रही हूँ that it is very important that hiring is okay, selection process is okay, orientation is okay, but how to maintain those employees with very good impact, right, with those motivation which you have promised them from the day one,
और अभी आपने जो प्रोमिसेस किए थे एज ऑर्गेनाइजेशन, आर यू फॉलोइंग देम? जब हमारे यहाँ पे कंपनीज आती हैं तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, फ्लावरी बातें होती हैं, बट एक्चुअली are they following those cultures into the organization? If yes, the employee feels satisfied, the employee feel motivated and want to develop themselves, want to see their career graph in that organization happily. If not, they would like to change the organization. In another organization, they would like to shift. So turnover level should be very less, right? Then the hiring decisions, right person at right time at right place is very important. Treatment to the client. आप क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रंट डेस्क है या फिर जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, उससे आपका कंपनी का रिफ्लेक्शन होता है, राइट? एंड हाउ मच योर क्लाइंट इज सेटिस्फाइड विद योर वर्क एंड एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ योर ऑपरेशन, द क्वालिटी प्रोडक्ट विच यू आर प्रोवाइडिंग एंड मेनी मोर थिंग्स विच यू कैन प्रोवाइड, with which you can reflect the company's culture, right? Wonderful example to this culture is Tata, wherein Tata Group of Industries provide, you have that respect for Sir Ratan Tata and the companies which they are nurturing, and the employees who are working are one of the most satisfied employee around the world, not only in India, right? So ये जो कल्चर है ना, ये रिफ्लेक्ट होता है. ये आप बोल नहीं सकते कि ये कल्चर ऐसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, but it reflects from your work culture, from your surrounding, the way you talk, the way you dress, many things come in between. Okay, any doubt till here, students? Next slide please. Now this is something very wonderful. Have you heard about the iceberg model previous to this? What it is? Anybody, any idea what is iceberg? Yes or no? Not really, ma'am. Not well. Okay. You will study this in, I think, 4th sem of MBA. This is something very important theory in strategy. Iceberg theory means, let us imagine कि हम सब एक रिवर में जा रहे हैं और वो रिवर के पास बहुत सारा स्नो है, बहुत सारे माउंटेन्स है, बहुत सारा स्नो है. Now sometime it happens, very rarely, but yes it happens, कि एक आइस की छोटा सा माउंटेन आपको सामने दिख रहा है, ठीक है? आप शिप में जा रहे हैं या फिर अपना बोट या याच में जा रहे हैं और आपको वो आइसबर्ग दिखाई देता है. अब आपको वो आइसबर्ग छोटा सा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, छोटा सा माउंटेन है, आपको ऐसा लगता है. बट इन रियलिटी वो आइसबर्ग नीचे बहुत बड़ा हो सकता है और धीरे 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 वो बाहर आ रहा हो, राइट? सो दैट इज आइसबर्ग. इन द सेंस हियर इन मैनेजमेंट, आइसबर्ग थियोरी मीन्स कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी के कल्चर में, जो एज एम्प्लॉय हमें दिखाई नहीं देती. हमें समझना होता है व्हाट दैट इज ऑल अबाउट, राइट? हमें सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें दिखाई देती है. जैसे उन्होंने बोला, आपको ओरिएंटेशन में बता दिया दैट दिस इज द विजन ऑफ द कंपनी, दिस इज द मिशन ऑफ द कंपनी, दिस इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, या फिर ये हमारी कंपनी की स्ट्रेटजी है. लेकिन जो मेन चीज है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा है, वहाँ पे रिलेशनशिप कैसा है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अच्छे से बात करता है या नहीं, एक डिपार्टमेंट दूसरे को काटने दौड़ रहा है या फिर अच्छे से वर्क करता है, स्टेटस कैसा है, क्या हिरार्की मेंटेन होती है कंपनी में, वैल्यूज नॉर्म्स कहने के लिए है या रियली दोस वैल्यूज एंड नॉर्म्स आर फॉलोड बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट आर द पीपल फंडामेंटल नीड्स, लाइक the safety which employee want to have in the organization, the good salary as per the industrial norms, या फिर the good behavior by your immediate supervisor. क्या ये सब बातें सिर्फ कहने की है या फिर actually they are followed? That is the cultural iceberg model. Okay, so many things you will realize in your this 2-month internship. आपको अभी से लगना शुरू हो जाएगा कि what they say they might not be applying it in their organization, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको समझना है,
They are not going to communicate it to anybody, and we need to absorb that, understand that, and behave accordingly in that particular organization, right? So this is iceberg's model. Any doubt into it? Now it is clear? Nobody says yes, no. Yes, ma'am. Huh? Okay. Now the main thing, that is how to create that strong corporate culture. क्या करना चाहिए एक कंपनी को जिससे कि आप एक बेहतर कल्चर इनकलकेट कर पाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. So first is successful collaboration. Now collaboration is understanding each other or making a relationship with each other. Now this collaboration can be with your employees, the immediate workers. It can be with your clients. It can be with your bankers. It can be with your various financial institution. It can be with your supplier. Most importantly, it can be with your customers also. So there should be a very good collaboration with the employees, and it should be very friendly and better understanding with each other. Fun environment होना चाहिए employees के लिए खासकर, because they get bored in the organization when they work more. So they should have fun environment, like they should go for picnic or some high tea together with their boss. They should have good time. They should enjoy, right? So many things can be there which impact the collaboration and the fun environment, right? Fun environment बहुत अगर आप organization में movie एक देख रहे हैं अपने multimedia room में together, and you are having high tea together, and corporate games खेल रहे हैं आप लोग, ठीक है? So that environment give you that refreshing mind, and not only that, but it increases the understanding between the superior and supervisor as well as the peer group which they are having in the organization. Trust is very important. आपके ऑर्गेनाइजेशन में कलीग्स के अंदर ट्रस्ट का बॉन्ड होना बहुत जरूरी है. एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. इससे आप एक बेहतर कल्चर इनकलकेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, व्हाट यू से यू डू इट. People say and they don't do it, that is not appropriate, right? Then flexibility should be there. People should give them that flexibility के काम अगर 4 घंटे में हो जाता है तो give them that freedom to work from their home or from their office, and a better work culture can be created because you are giving them that freedom, right? आप देखें अगर डेवलप्ड कंट्रीज का अभी देखें, स्वीडन है and other northern countries are saying okay, they will do less this days work culture, and उससे क्या होगा कि organization better work कर पाएगा, क्योंकि जितनी देर वो लोग कंपनी में आ रहे हैं they are giving their best. It is not important कि इतनी देर आपको रुकना ही है, जैसा कि आपने previous video में भी देखा, right? How much time you qualitatively spend in your organization, that is very important. Okay, then positive feedback, you feel positive, then only you give positive feedback. Then the rewards, तो proper rewards अगर मिलते हैं तो employee feel motivated, and the practical perks, perquisites आप अच्छे दीजिए, employee को better facility दीजिए, employee would inculcate your culture and will do better in the organization. Next slide please. Now, how the company measure the culture? ठीक है, कंपनी अगर कल्चर मेजर करना चाहती है तो क्या करेगी? फर्स्ट इज एम्प्लॉय सर्वे. एम्प्लॉयज का सर्वे लेना चाहिए, उनसे क्वेश्चनर फिल करवाना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग देम. नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी कल्चरल मेजरमेंट. मीन्स थर्ड पार्टी जो है वो आपके कल्चर को मेजर करे, एम्प्लॉयज नहीं. सम अदर पीपल लाइक anybody like customer or supplier, they may calculate the cultural tool which you are implementing in your organization, how successful it is. Focus group एक मेथड होता है, मार्केटिंग में आपने पढ़ा होगा, आपको हिमांशी मैम ने पढ़ाया होगा. डू यू रिमेंबर व्हाट इज फोकस ग्रुप स्टूडेंट्स? Anybody? Focus group. ओके, फोकस ग्रुप मीन्स आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेते हैं
और उसको स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ या फिर सर्वे के साथ आप स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कंपनी का जो कल्चर है वो किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, कितने एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं आपके कल्चर से और कितने नहीं. ओके, देन एग्जिट सर्वे. एग्जिट सर्वे मीन्स एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, एट दैट टाइम यू टेक द सर्वे एंड दैट इज वेरी रियलिस्टिक बिकॉज दे गिव यू द राइट फीडबैक. ओके, सो एग्जिट सर्वे बहुत सारी आईटी कंपनीज में लिया जाता है कि आप क्यों कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, व्हाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड. Then organization cultural assessment instrument. These are various instruments through which they calculate the culture. Then business need scorecard. You make a scorecard कि business need क्या है, culture क्या उसके साथ relate हो पा रहा है, right? Your business need is that you want to become a very trustworthy company in front of the customer. तो क्या वो culture आप organization में create कर पा रहे हैं या नहीं. आप कंपनी में झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, एंड यू से दैट यू आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कंपनी. सो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए. देन बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल. दिस इज अ स्केल मेड बाय अ साइंटिस्ट वेयर इन योर बिहेवियर एंड ऑब्जर्वेशन इज स्टैटेड. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, दिस इज What do employee want? अभी तक हमने किया है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहती है, क्या करना चाहिए और उसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए किसी कंपनी की कल्चर को, राइट? कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट पीपल वांट from the organization, what you as intern want from the organization. First is you want flexibility. Say yes or no. That freedom, flexibility you want in the organization or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because we don't want to work in a very close environment, and nowadays the culture is such, the people are such, they don't want to get bound into one thing, right? तो उन्हें flexibility जितना आप दोगे उतना better आपको work मिलेगा, right? Then strong organizational culture, जो आप बोलते हैं, जो आपका vision है, mission है, उसको आप actually implement कीजिए छोटी छोटी चीजों. Great managers, people don't leave organization, people always leave their managers, their immediate bosses who try to insult the people. So it is very important that you should have good managers in the organization. Meaningful work should be there. You should feel content when you are working in the organization. Proper recognition and appreciation आपको देना चाहिए जो भी employee अच्छा काम करते हैं. ऑनगोइंग लर्निंग होना चाहिए. हर एक समय आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको कुछ डेवलपमेंट हो रहा है इस कंपनी से. एक एम्प्लॉय ऐसा महसूस करना चाहिए कि मुझे ट्रेनिंग मिल रहा है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, एंड आई एम बिकमिंग बेटर डे बाय डे व्हेन आई हैव एंटर्ड द ऑर्गेनाइजेशन एंड टिल टुडे. एंड जेन्युइन कमिटमेंट होना चाहिए कंपनी का कि वो हेल्थ के बारे में, वेलबींग के बारे में एम्प्लॉयज को एनकरेज कर सके, राइट? इंश्योरेंस देना चाहिए, एम्प्लॉयज का हेल्थ चेकअप होना चाहिए, सो दैट एम्प्लॉयज फील सिक्योर एंड सेफ एंड बेटर इन द ऑर्गेनाइजेशन. Next slide, please. So this is almost the, I think the second last slide, wherein these are the things जो कि कंपनी, अभी आपने पढ़ा कि एम्प्लॉयज कैसा एक्सपेक्ट करते हैं, और दूसरा आप ये जानना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, राइट? अब इन दोनों का मिक्सचर करके ये एक मेरे सामने चीज है, दैट इज द रूल्स शुड बी मेड प्रॉपर्ली, इट शुड बी फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, द पर्पस शुड बी गुड, द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड मैच ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज विजन एंड मिशन, राइट? कल्चरल वैल्यूज होने चाहिए, आप जो बोलते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में करके दिखाइए. प्रॉपर विजन होना चाहिए, राइट? कॉर्पोरेट वैल्यूज आपको एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करनी चाहिए. वेरियस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज शुड बी मेड एंड दैट शुड बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी. प्रॉपर स्ट्रक्चर, किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी चाहिए. वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एम्प्लॉय विद दैट एम्पैथी, राइट? एंड पार्टनरशिप वर्किंग, वी शुड make them partner by giving them ESOPs, right? ESOPs means, any idea what is ESOPs? Where the employees get stocks as the incentive. What is the full form of ESOPs? Employee stock option plan.
Yes, employee stock option scheme or employee stock option plans. Right. So, Agam, you were saying something. Please contribute. No, ma'am. Saying full form only. Okay, fine. So this, you can make them partner by giving them your shares at very nominal cost, which is not the market cost, and the employee can feel that yes, we are also the co-owner of the company for those particular amount of the shares, and they also feel that if the company is growing, our shares are also growing, and the feeling of ownership is actually very good. So these things are very important so that you can inculcate a proper culture in your organization. Next slide, please. So the key takeaways are you need to understand the company's culture. You need to understand that how you can adopt. हमेशा अपने दिमाग में वो आइसबर्ग रखना जब आप कंपनी में वर्क करते हैं, जो दिखता है उसके नीचे बहुत सारी अंडरसाइड थिंग्स होते हैं जो कि हम नहीं जानते, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी नीड टू अडॉप्ट दैट. राइट. सो इंटेंशनली हमें ग्रो करना है, कंपनी की आइडियोलॉजी को समझना है, एंड वी कैन वर्क विद देम longer period if we feel comfortable with them. Next slide, please. So this is a video, a small video about corporate culture. Let's have a look on it. Then we can have question answer sessions. This is it from my side. Now, Rahul will move further with the various other question answer sessions from your side. If you have some questions, if you are facing some issues in your internship, you may ask it. Hello, ma'am. Hello. Yes, Rahul. Sorry, I was mute. Yes, ma'am. I was just asking you that as now we have joined the internship, and we are also asked to do the project of SIP, and also it's really difficult to manage the time because from morning to evening, I mean, if we have the internship which is really far, like it takes more than 1 hour for me to go. So around 12 to 12 hours we are right in traveling and in internship and all. So it's really difficult to manage the time, and also
how can we deal with that? Actually, what your SIP is not something different. मैं आपको समझाती हूँ. आप जो ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट वे आई एम टेलिंग यू. आप उसका डायरी कीपिंग रखना शुरू कर दीजिए और अल्टीमेटली यू कैन मेक अ प्रोजेक्ट ऑन इट. प्रोजेक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा इफ यू हैव अंडरस्टूड द थिंग इन अ बेटर वे? नहीं लगेगा ज्यादा टाइम. यू कैन जस्ट हैव अ कंपनी इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, फिर आपने जो काम किया उसके बारे में लिख देंगे एंड यू विल फाइंड द कंक्लूड एंड फाइंडिंग्स. इतना टाइम नहीं लगेगा. द वे यू आर टेकिंग इट, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. अभी आप कुछ मत करो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड. अभी आप जस्ट डायरी कीपिंग स्टार्ट करो कि क्या करना है मुझे ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट आई एम डूइंग इट, right? Only first thing which is very important is you need to decide in a week after joining your organization that on what topic you want to study, right? आप क्या कर रहे हो वहाँ पे. Let's take an example. राहुल, आप वहाँ पे क्या आपका वर्क है बताइए. मैम मेरा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पॉलिटिकल रिसर्च एनालिस्ट. इलेक्शन nice. आ रहे हैं ना. Very nice. That is one of the best thing you have got. So you can study on it and you can make project on it. Very simple. है ना. आप जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे हो, कैसे आपने काम किया वहाँ पे, क्या क्या आपको रिसर्च करना पड़ा, क्या क्या कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए, किस तरीके से आपने डेटा एनालाइज किया, क्या आप खुद एग्जिट पोल के लिए सर्वे करने गए थे. सो व्हाट वर द क्वेश्चनर. यू कैन ऐड दोस थिंग्स वेरी नेचुरली. यू कैन ऐड दीज थिंग्स इन योर SIP and that would be the wonderful one. Getting me, or still you want some more implications on it? Got it, ma'am. Thank you. Yes? Okay. Any other question? Yes? Any other question from anyone? Ma'am, how to deal with failure? Like I have discussed this with you already, so I just want to know like how to deal with failure. Their failures are very important in life. Telling you very emotionally and seriously. Because when you fail, you have that thing that something will come, something will ignite in your mind that yes, I have to success with this thing. मैं आपको एक बात बताती हूँ. मैं मेरे बच्चों को ये बात कई बार अपने जीवन का बताती हूँ कि I was in 4th or 5th, और उस समय तो बहुत छोटे में फर्स्ट में ले लेते थे CBSE स्कूल में. So I studied my all study from 1st to 12th is from CBSE स्कूल केंद्रीय विद्यालय. तो वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग डेली होता था एंड देयर वाज अ कमांडर जो असेंबली लेता था. अब असेंबली में क्या होता था कि सडनली वो किसी का भी रोल नंबर, क्लास एंड रोल नंबर, क्लास सेक्शन एंड रोल नंबर बोल के अनाउंस करते थे. उसको सामने आना था. एक दिन हिंदी में होती थी असेंबली और एक दिन इंग्लिश में होती थी. जिस दिन हिंदी में असेंबली है उस दिन आपको हिंदी में ही बोलना है, ठीक है. पब्लिक स्पीकिंग आपका कोई भी टॉपिक चलेगा. एंड इंग्लिश में हो उस दिन इंग्लिश में बोलना है. एक दिन मेरा रोल नंबर आ गया. रोल नंबर 3 था. मेरे आज भी याद है. क्लास 4 रोल नंबर 3. और आई वॉज वेरी टिमिड. बहुत डरी डरी सी मैं स्टेज पे गई और मैं माइक पे जाके कुछ भी नहीं बोली. मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोली. आई डोंट नो, आई रियली फेल्ट बैड दैट डे. वो दिन मुझे आज भी याद आता है कि हाउ आई वॉज अनेबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ होल स्कूल एंड आई वुड हैव सेड माय नेम एटलीस्ट. वो भी नहीं बोला. देन आई थॉट नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा. अंदर 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 मुझे वो फेलियर का पॉजिटिव, मैं हमेशा से बहुत पॉजिटिव रही, तो वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर जागने लगी. मुझे लगा नहीं, आई हैव टू बिकम अ वेरी गुड स्पीकर. Forget about school, but overall I want to become a good orator. और उसके बाद I think 1 साल के अंदर फिर से मेरा नंबर आया and I spoke so well, you will not believe it, कि उस दिन प्रिंसिपल सर क्लास में आए. Similar thing, I was in 4th itself and he said clap for this girl because उन्हें भी याद था प्रिंसिपल used to remain present in the assembly all the day. तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जगदीश सर थे, डॉक्टर जगदीश सर थे उस समय. मुझे आज भी नाम भी याद है उनका. तो he clapped for me along with the class and he said that wonderfully you have said the things.
तो अपने फेलियर को अपने आप ही हराना जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हमारी जिंदगी में होती है, तो उसको बाहर आना, पॉजिटिवली सोचना और उसको कर दिखाना इज द ओनली सॉल्यूशन। You have to win with yourself first and then with the world, right? I hope I have given you the answer with my experience at least. Yes, ma'am. ऐसा बहुत होगा लाइफ में, फेलियर्स आते हैं, मगर हमें अपने आप से जीतना है, हमें अपने आप को समझाना है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एनीथिंग एल्स? जयेश, यस प्लीज बोलिए। Yes, ma'am. First of all, thank you for to giving me this type of knowledge. Ma'am, what happened with the internship in the Bank of Baroda? For me personally, I am not doing the intentionally that type of work, but the flip side of the person feel that like, I'm doing hurt by that work. हुआ क्या कि actually I am not facing that problem. The branch manager doing something work with the related of the personal work. Okay, the another one staff was disappointed by the manager, and she was disappointed and she leaving the branch, and she was leave the place. So what will be do the as an intern? I know about that things ke what happened because branch manager is doing the work routine work, okay, but the another one was the just facing the problem के सर मेरा काम नहीं कर रहे, सर मेरे को ऐसा मतलब गिव अप कर रहे, मतलब नहीं उसमें आप बीच में कहाँ है ये बताइए। आए ना एक्चुअली में द वर्क वाज द माइन, ब्रांच मैनेजर मेरा वर्क कर रहा था रिलेटेड ऑफ द इंटर्नशिप, एंड सी वाज डिसअपॉइंटेड बाय मी कि कल का आया बच्चा के लिए हमारा वर्क नहीं कर रहे। सो मेरा तो कुछ रोल हुआ नहीं ना। देखो देखो जयेश, मैं आपको बताती हूँ, ऑर्गेनाइज, इसीलिए मैंने आपको कल्चर की डेफिनेशन पहले बताई, फिर कंपनी की कल्चर की बताई। मेरा ये पर्सनली मानना है कि हमें बहुत सुलझा हुआ रहना चाहिए लाइफ में। कहीं पे भी नेगेटिविटी हो रही है, डोंट वरी अबाउट इट, दैट इज देयर प्रॉब्लम, बिकॉज उनका माइंडसेट ही नेगेटिव है। धीरे 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 क्या होता है, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं और बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। आपके साथ नहीं, उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया होगा इन पास्ट, ठीक है? तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना इज द ओनली सॉल्यूशन। गिव योर बेस्ट, बी द बेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई टू गिव योर बेस्ट। आपको सब लोग हेल्प करेंगे, ऐसे लोग हो सकता है आपको हेल्प ना करें, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसे बहुत नेगेटिव लोग आपको अपने लाइफ में मिलेंगे, ठीक है, बट उसके लिए वरी करने का जरूरत नहीं है। आप अपना काम करवाओ, आप अपना जो भी है यू कैन से, राइट? एंड अगर आपको गिल्ट हो रहा है तो टेल दैट लेडी ऑल्सो सॉरी, राइट, कि सॉरी मैम, आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई, but I am here to learn many things, ma'am. I have lot of big dreams and I am working on it. ऐसे करके आप उनको बोलो, be very humble to everyone, be very positive, और ऐसा मत सोचो कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, ये सोचना छोड़ दो, right? But ma'am, she was leaving the place. छोड़ रहे हैं वो कंपनी, ऐसा? मतलब वो मतलब उन्होंने उस टाइम पे ऑन द रनिंग टाइम छोड़कर चले गए, लीव कर दी प्लेस, ब्रांच को छोड़कर चले गए। तो उनको कोई प्रॉब्लम होगा पहले से, बहुत सीरियस, आपकी वजह से नहीं हुआ है ये। पता नहीं, ऐसा नहीं करते, नहीं आपके लिए नहीं हुआ है, आई एम श्योर अबाउट इट। उनका खुद को कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी मैम, बट बोलेंगे नहीं, उन्होंने किसी को बोला नहीं, बट सब वाज रूमर के ये जेस्ट आए और जेस्ट का वर्क चल रहा था ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कोई कंपनी छोड़ के नहीं जाता। आप जाओगे ऐसे कंपनी छोड़ के? तो नहीं जाता भाई, किसी के लिए मैं क्यों छोड़ूं? जाता, वो पहले से उनके दिमाग में प्लान होगा, उन्हें कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी या फिर उन्हें उनके सुपरवाइजर से प्रॉब्लम होगी। यू आर नॉट देयर इन बिटवीन, डोंट वरी अबाउट योरसेल्फ। एक छोटा सा कारण आप हो सकते हो, बट बहुत बड़ा कारण आप नहीं हो सकते, राइट? सो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, राइट? यस मैम, यस मैम, थैंक यू। आप नहीं हो बीच में कहीं भी, मुझे पता है, ऐसा तो ये सब तो चलता रहता है, बट वी आर नॉट द पर्सन हु इज दैट मच रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, फॉर समबडी, है ना? दैट इज हर परसेप्शन, राइट? यस मैम। हाँ, सो डोंट वरी, रिलैक्स। यस दिया। Ma'am, I might be asking something out of the box, but it is like my personal question. What if I start a business and I want to hire employees? So, as you know, कि new business होगा तो जल्दी कोई आता नहीं है. Like new है तो stability नहीं होगी, तो आएंगे नहीं, salary नहीं मिलेगी, kind of. So how should I like
make them understand कि हाँ हमारा scope है and in future we will do something. See, what a wonderful idea you have. You should start your own business. You should become an entrepreneur. You have those qualities and you are very positive. तो क्या होगा, लोग आपके साथ आएंगे और आपके साथ वो काम करना चाहेंगे, राइट? यू नीड टू एक पॉजिटिविटी आपको लोगों को देनी होगी कि हाँ हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं. एक बॉन्ड बनना बहुत जरूरी है. जब वो बॉन्ड एम्प्लॉइज के साथ बन जाता है ना, तो दे वर्क विद यू पीपल. हाँ, शुरुआत में डिफिकल्ट होगा, लोग नहीं आएंगे, बट लेटर पीपल, यू विल गेट मेनी पीपल्स who are very, you will become good and friendly to you and you can work with them positively, right? So it is a very good idea. First of all, go with it. If you want to become entrepreneur, it is a wonderful idea and people will come. ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल लोग ही नहीं आएंगे, काम ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, right? And you are a new generation student, you can put advertisement on various places and it is very, very sure that people will come and reach you and will love to work with you, right? Yes, ma'am. Don't worry. कभी है ना, अपनी पॉजिटिविटी की दौर मत छोड़ो. That is the most important thing you can do. And help people. Those who come to your organization, you need to help them. You need to understand them also. Then only they are going to understand you. है ना? हाँ जी मैम. Next, anybody? Ma'am, can I? Yes, Dhwani, bolo. Ma'am, I have a doubt related to the project that we have to do. So we can go with Little not the audible. topic. थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप? Little not audible. Your voice is cracking. Yes, ma'am. Audible? Yes. Ma'am, I was asking related to the project work. So how we can select a topic on that and how we have to make the project? आप कौन सी कंपनी में गए हो? फार्मास्यूटिकल कंपनी, राइट? Yes, ma'am. वहाँ पे क्या काम हो रहा है? Ma'am, there we are getting knowledge regarding to the finance manager. मतलब अभी वो जो वहाँ के finance वो हमें GST और इसके बारे में सबके बारे में अभी हमारा चल रहा है. Okay. So what exactly they are going to give you? मतलब क्या आपको डिपार्टमेंट फाइनेंस देंगे, उसमें क्या काम करवाएंगे? आपको पता चला है अभी तक? मतलब उन्होंने हमें तो ऐसा बोला है कि आपको सारी फाइनेंस के रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो हम आपको सिखा देंगे. मतलब जो फ्यूचर बेनिफिट होगा तो वो सब. आप ओके, फ्यूचर बेनिफिट एंड ऑल, राइट? तो आप उससे फाइनेंस से रिलेटेड एक टॉपिक पकड़ लो, जो वो आपको करा रहे हो उसमें से एक टॉपिक, या ओवरऑल द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, ऐसे भी आप टॉपिक ले सकते हैं और उस पर आप वर्क कर सकते हैं. मैं क्या चाहती हूँ आपसे, आप सभी से, कि आप लोग अलग से एसआईपी की मेहनत मत करो. जो आपको सिखा रहे हैं हम वही जानना चाहते हैं एज प्रोफेसर्स. समझ में आ रहा है ध्वनि? तो आपको क्या करना है, आपको कंपनी में जो सिखा रहे हैं ना, वो डेली का डायरी मेकिंग करो ना. एक हफ्ता आप वहां पे काम करो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट होना चाहिए आपका. ऑफ कोर्स फाइनेंस से रिलेटेड होगा. आप ये भी रख सकते हो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दिस कंपनी, व्हाटएवर कंपनी नेम इट इज, राइट? तो ऐसे करके आप स्टडी कर सकते हो उसके बारे में. ओके, या फिर आप एक हफ्ता और वेट करो, क्योंकि आप अभी ज्वाइन हुए हो जहां तक कि मुझे पता है. तो अल्टीमेटली यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू वांट टू स्टडी इन दैट कंपनी रिलेटेड टू फाइनेंस. एक पर्टिकुलर टॉपिक भी हो सकता है और एक मैक्रो टॉपिक जो कि मैं आपको दे रही हूँ वो भी हो सकता है. ओके, ओके मैम, थैंक यू. एनीथिंग एल्स? हाँ, यस, anybody else having any query? Any query, anyone? No, ma'am. Okay, fine. Then what is the next step, Rahul? Yes, Dignesh, please ask. No, ma'am, no doubt.
Okay. Okay. Rahul, do we have some PPTs next to this? Yes, ma'am. We have an Okay. activity. There is a good activity for all of you. You need to answer that. Okay, we are going to hear it. That how will you face the problems and the solution you are going to sort it out. Yes, please. Yes, first of all, everyone, please turn on your camera so we can take a screenshot. Ma'am, you are on mute. Please turn on your cameras, all of you. Dhwani, last moment. कुछ करने की Yes, जरूरत ma'am. नहीं. Just turn on your camera simply. Yes. All of you are very beautiful. No need to do anything. Yes. Okay. So, everyone, uh, we will be giving you situational based questions which are related to corporate world, and you all need to answer your views as if you are in that situation. So how would you handle it? Okay? So everyone ready? At least say yes or no to the T. Yes. Okay. Rahul, please share the screen. Rahul? Okay, no problem. Next, please. Okay, everyone. So your first situation is that if you are manager, if your manager asks you to do something which is against the policy of the firm, then how would you react to it? Guys, please share your views. One more thing, students, please participate. Otherwise, such webinars are of no use, right? So please participate. It is for you we have kept this program. And since 5-6 days, these people were working very hard for it. So please participate, all of you. Otherwise, next time सोचना पड़ेगा कि ऐसा program रखे या ना रखे, right? So don't leave the program. Participate so that you also feel that yes, you have contributed to it nicely. Ma'am, can I try? Yes, please. Yes, please. मैम अगर कोई अगेंस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट काम करने को बोल रहा है तो शायद मतलब मना भी कर सकते हैं या फिर हायर अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हैं. What else? Kunik raised the hand. Kunik, you want to say something? Yes, ma'am. First of all, ma'am, I would ask the manager that what is the type of the work that he is telling us to do, and is that work is going against the company's norm. Here it is written that the work is against, but it does not make a loss to the company or its employees.
So if it does not hindering the employees or the organization, then definitely I would work on it. Kunj is saying something. Kunj. डोंट बी सो फियर्ड. इतना डरने का जरूरत नहीं है. एकदम शेर बन के रहने का और बोल देने का कि नो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क फॉर दिस थिंग. राइट? इफ यू फील दैट इज वेरी अनएथिकल देन ओनली. अदरवाइज थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है. बट येस, इफ यू फील देन डोंट डू इट. आई इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, if I feel unethical, I don't do that work. Anybody else? Anyone else? Okay. Next situation. So your manager asks you to cover the work of your co-worker who has gone off sick. You must do your work in addition to your co-worker's part, which he or she was supposed to do today. How would you deal with it? Yes, Swani. If uh, if if my coworker is not there, then I would work on behalf of him or her, so that in the next future, coming future, if I may fell sick or something, so he or she can also work on behalf of me, so we can coordinate accordingly and work in an organization. Okay, fair enough. What else? Anybody else? अगर मैम कोवर्कर का जो वर्क है वो प्रायोरिटी में ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो पहले उसका कंप्लीट करेंगे फिर हमारा करेंगे. Nice. Who else want to answer? Yes, Priyanshi. Yes, I think that there is no other option. See, we work as a team. So if yes, we work as a team. So if my coworker is sick, so that is a genuine reason. And being a team member or a coworker, I should do that. It maintains the good environment and good culture between two employees. Very nice. Good. All of you are very helping and very supportive and very empathetic. Happy to hear this. Yes? मैम बट everyone is right, but I would say अगर मैं सेंटेंस देखने जाऊँ यहाँ तो there is written you must do, like ऐसे तो नहीं हो सकता ना, like manager should have like requested us or pleased us या फिर अच्छे से बोले. You must do तो मतलब टोन ही अलग हो जाती है. हाँ ठीक मुझे है, भी समझ मैनेजर भी अच्छे होने चाहिए. वही मैं कहती हूँ ना कि ऑर्गेनाइजेशन लीव नहीं करता बंदा, मैनेजर और सुपरवाइजर लीव करके जाता है. राइट? So manager should be polite enough, should be, you know, very sensitively telling you people that today this person is absent and we need this work today itself and that person is not able to do it. तो इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो लोग काम करते हैं. राइट? हाँ, ये थोड़ा सा टोन ऑथोरिटेटिव है, बट मेन दे वांट टू आस्क दिस ओनली कि अगर आपके साथ का कोवर्कर है एंड दैट पर्सन रिमेन एब्सेंट, हाउ विल यू डील द वर्क? ओके. यस मैम, बिकॉज मतलब ऐसे कुछ यूज कर रहे हैं ना तो पर्सन टारगेटेड फील करने लगेगा कि हाँ मुझे सब कुछ पकड़ा रहा है ये वो. दैट्स माय पॉइंट. Anybody else want to say something on it? Next situation. Next. Yes. So you see, one of your colleagues is stealing things from the office, and the camera of this storeroom is not working, which only a few people are aware of it. So how would you react to it? Guys, come on. क्या करोगे? कोई चोरी करता हुआ दिखाई दिया तो?
So, sorry, ma'am, I would talk to him personally, like it's company's property and we might need those things in future. So don't do this, else I have to contact my superiors. बट वो आपका बेस्टी निकला तो तो मैं उसको प्यार से या फिर एक दो गाली दे के समझा दूंगी हाँ कि मत कर ऐसे. है ना ऐसा नहीं अनएथिकल इज आई ऑलवेज बिलीव दिस के आप मैं मोस्ट प्रकृति को भी यही कहती हूँ कि अगर आप खाली कमरे में भी हैं कोई भी नहीं है तब भी आपको कोई गलत काम नहीं करना है बिकॉज unethical is unethical and never it is between two humans, it is always between you and the god, it is always between you and the god. So god is always there with you, so when you do something unethical, that is accounted in his or in the books of God. Yes, so that is very important. Anybody else want to say something on this situation? Yes, Dhwani, बोलिए. Point of time only I will tell him so that he can feel guilt in herself or herself so that no one else can know that he is doing the same thing and he will feel guilt in himself or herself so he will not repeat the work again. Little bit inaudible. Krishna, can you hear her? No, no, Dhwani, you are not audible. Can you please repeat? Sure. Am I audible? No, little bit louder. Now am I audible? Huh. So I will, at that point of time only, I will stop him and tell him not to repeat the work so that other people cannot see him or her so that he or she can feel guilt in herself or herself only so that he could not repeat the same work again. Okay. मैम एडिंग टू ध्वनि's थिंग आई वुड से कि मैं उसको ये भी बोलूंगी कि इट्स अबाउट हिज और हर इमेज ऑल्सो, लाइक इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो लाइफ टाइम उसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है. इन फ्यूचर उसकी ये चीज उसको अफेक्ट करेगी बिकॉज हिज कलीग्स विल टेल अदर पीपल ऑल्सो कि उसने ये हरकत की थी, तो सो बी केयरफुल. सो जो दूसरी कंपनी में एम्प्लॉयर होगा ही विल थिंक अबाउट दिस एंड उसका पूरा करियर मतलब उस पर बेस्ड हो सकता है. Yes, yeah. एब्सोल्युटली. आपको पता है ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे फेक डिग्रीज बाके और रिक्रूटमेंट ले लेते हैं लोग एंड लेटर दे गेट टू नो दैट दीज वर फेक degrees and the company takes strict action against them. So these type of forgery and wrong things are not appropriate. Mohit Adya want to say something. Yes, Mohit. Yes, ma'am. Ma'am, if it's first time, so I would definitely show some empathy and I would ask him personally, him or her, that why have you, done this thing. But if it's a repeated thing, and if I know about it, I won't be unforgiving. I would simply, take out my phone's camera if I know that the camera is not working, and I would record and catch him or her red-handed, and I would show the boss that this is what he or she is doing repeatedly. The camera is not working. So it depends on the situation. If it's first time, empathy. If it's again and again, no forgiveness. Just straight out fired. Perfectly correct. Yes. Anybody else want to say something? Kauchalya. No, ma'am. Mohit stole the same exact words that I was going to speak. Okay, okay, fine, fine. Next, please. Yes. So you have recently started a new job managing a more specialist customer service help desk. In your first few weeks, you quickly realized that most of the team are introverts and don't converse much, even in your one-to-ones. There is poor team spirit and hence quite a low job satisfaction. How would you react to it? Yes, Cordelia. Change the staff. I will Sorry. change this staff because it's a new business. I do not have I have literally no time to teach these people how to become an extrovert and how to deal with people. So I will change the staff. Okay.
Yes, Mohit. Yeah, so Kautilya, if it's a new business, you have tremendous lack of resources, and to change the staff, it will require lot of resources. So इससे अच्छा है changing the whole staff and employing or wasting the resources. You train them. Training them would be much cheaper. You yourself, if you are the owner, take some tasks on your hand and show them how it's done. तो पहले तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट दे विल सी योर स्पिरिट एंड द वर्क इज डन. रिजल्ट देख के सबको मोटिवेशन आता है. जब काम कन्वर्ट होता है, मेहनत कन्वर्ट्स इनटू रिजल्ट्स. तो मेरा ये ओपिनियन है कि यू शुड ट्रेन. कौटिल्य, मैं भी आपको एक बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि व्हेन यू डू दिस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और जब आप रिक्रूटमेंट पे आते हैं तो आप ये देखते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजन बाय हायरिंग एन एम्प्लॉय. First is making an employee, other is buying an employee. When you make an employee, it means आप semi-trained employee or less trained employees, you are hiring them and you are going to train them because you don't have much money, and you will train them according to your needs. And buying employee means you are buying with the trained efficient employee who will get the all the qualities and invest in your organization. But of course these people are little expensive. They need to you need to provide them more salary. So the decision is yours. If you have money, you can buy them. If you don't have much money, you don't want to invest because this is a new organization, you can make them, right? So these are make or buy decision. Okay, yes, Payal. मैम ये है कस्टमर सर्विस हेल्प डेस्क की जॉब. तो इसमें पूरी इटनरी कभी भी देखा जाए तो प्रिपेयर्ड होती है कि ये सिचुएशन में आपको ये बोलना है, ये सिचुएशन में ये बोलना है. इवन इफ अ पर्सन इज इंट्रोवर्ट मैम, उसके पास पूरी है ना लिखा हुआ होता है कि आपको ये क्वेश्चन पे ये आंसर करना है. तो इट्स अ फॉल्ट ऑन अ पार्ट ऑफ अ मैनेजर कि आपने उसको वेल ट्रेन नहीं किया है या उसको पहले से वेल प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट नहीं दी है कि आपको ऐसे रिएक्ट करना है, वैसे रिएक्ट करना है. तो इट्स नॉट अ क्वाइट लो जॉब You are right. सेटिस्फेक्शन ऑन हिज Somewhere, साइड बट you are आवर right. साइड. Somewhere training is lacking, right? How to answer the customers. Okay, nice. What else? Next, please. You arrived at work this morning to discover that everyone in your workplace except you had received a new office chair and a table to work. On briefing the situation to the manager, it was said this talk would come after a month. How would you deal with this psychologically? Anybody? Yes, Mohit. Yes, so basically, I am going. I have a question. I am going to get it right after a month. He said that, but yeah, you're going to get it. I'm going to get. So I'll clarify to the manager that every other colleague has got best of the devices and everything to work. So their quality of work is going to be absolutely good than me. So bear with me for a month. अगर मैं ऐसा आउटपुट ना दे पाऊँ तो it's not my responsibility because it was out of stock. So the people who are working alongside me would have good quality of work. So manager will able to understand. I hope so that he will understand. Okay. Anybody else? Yes, Lubna. Yeah, it will affect the quality of my work as well, because when I see people around me getting better facilities, I might feel degraded that I am not that important for the manager, and why am I left out? So that feeling continuously goes on in my mind, and my work will degrade. Correct. Anybody else? And psychologically, you must handle it maturely. I mean, it's not like you are, you are discriminated against, or they have said तुमको नहीं मिलेगा. So it's fine.
I'm like waiting for a month, giving the disclaimer that the colleagues which will be able to achieve the work, I may not be able to because of lack of resources. Yeah. Okay. Anybody else? Okay, so the next situation is, as a team leader, you are constantly engaged in working on different tasks with your team. Amid a certain project, the company asks every employee to rate their team leaders. Some of the members of your team rate you as average. How would that affect the project and your relationship with the team? Yes, Tony? As ma'am said, we should take the thing in a positive manner and we should work more on it so that people can coordinate us and maintain our relationship in a better way. So we should not break the relationship with other and work accordingly. So we should take this as a positive feedback. Okay, correct. Yes, Devanshi? What I think is one should introspect that why this thing is happening और मुझे क्यों ऐसा रिव्यू मिला and secondly should try to improve even जो टीम में भी फ्रेंड्स हो ऐसे हो उनका भी आप ओपिनियन ले सकते हो Yes, and that correct. should not impact your performance. Okay. Yes, Mohit? Yeah, introspect to hoga hi, but before that, I would like to take stand for myself. I would go to the leader and list down all the projects I have handled, all the results and outcomes and the quality of it, and then I would say that sir, this is my work, this is the outcome. आप judge कीजिए, and if you feel that this is not up to the mark compared to my colleagues, then I would take suggestions of everyone, leaders, my friends, that where I'm lacking. Then I will do introspect. So this is the whole procedure I would follow. Correct. Anybody else? Okay, next. So you're working with one of your senior employees as a research analyst and accidentally you provide a wrong report and the senior employee has already made a presentation out of it and is going to deliver the presentation to the boss shortly. How would you deal with it? This is a Yes. disaster though. How would you deal with it, Mohit? सोचना पड़ेगा. सच तो बोलना पड़ेगा. मैम तो फर्स्ट तो पहले स्टैंड ही लेना पड़ेगा जो ब्लंडर किया है उस चीज का फिर बॉस के सामने जाने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी पहले लेनी उनको होगी. इन्फॉर्म कर दे. Information is very important. Yes. मैम ये इतने बिग लेवल का डिजास्टर है कि इसमें तो फिर सीधा फायर ही होते हैं. There is मतलब इसको हाउ कैन यू मतलब According to me, you will be fired. आप जब बताओगे नहीं तब लेटर उनको कोई डांटे तब. अगर आप कॉन्फिडेंस में लेते हो और बोलते हो सॉरी मिस्टेकनली आई हैव डन दिस एंड आई वुड लाइक टू चेंज इट, गिव मी some period of time, it may happen. Okay. मैम थोड़ा Yes. प्ले टाइम Yeah. हो जो सीनियर एनालिस्ट है उसको बोल भी सकते हैं कि मतलब हम दोनों मिलके फटाफट बना देंगे. हाँ वी वही विल वही मैनेज समहाउ. दूसरा कि सीनियर मैनेजर ने पहले क्यों नहीं चेक किया, उनकी भी तो गलती है, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. पर yes. हाँ यू कैन नॉट से दिस, यू कैन नॉट से Yes. दिस, समटाइम यू डोंट से दिस कि भाई आपकी भी तो गलती है, आपने भी तो नहीं देखा. अंत में आप देख रहे हैं है ना, लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते. आई अंडरस्टैंड. Yes, Tia, you raised your hand. I was about to say what man said. Okay.
मैम और अगर बॉस वुड बी स्ट्रिक्ट तो लाइन में फायर करेगा वो, मैनेजर को भी फायर, एनालिस्ट को भी फायर, अगर इफ ही इज स्ट्रिक्ट देन खड़ूस थोड़ा। हाँ, खड़ूस लोगों का प्रॉब्लम रहता है, बट बात आपकी सही है, ऐसा ही होगा। पहले हम बता दे तो नहीं करेगा ना फायर, वो नहीं, देखेंगे कि तो हाँ खड़ूस होते हैं उनका एम्प्लॉय नेचर बहुत ऑनेस्ट अलग है। होता है। या जो लोग ऐसे होते हैं उनका नेचर बहुत अलग होता है। आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। आप बताओ ओके कितना भी वो प्रॉब्लम करेंगे, होते हैं ऐसे लोग। एट दैट टाइम ठीक है, मुझे निकाल दो जाओ, बिकॉज बट आई हैव सेड द ट्रुथ, ऐसा फिर रखना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स? मैम ये सिचुएशन के बेस पे डिपेंड करेगा, मतलब बॉस कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स इस पे अफेक्ट करेंगे कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे इस सिचुएशन यस। में। यस। Okay, anybody wants to share? Okay. So if you guys are facing any situation or want to give any situation, then you can share. Anybody? Okay. So here we are ending our event. I Mohit, have a Mohit want to say situation. something. Mohit want to say something. या एक सिचुएशन मेरे साथ ही हुई थी यहाँ पे. सो आई एम करेंटली इन मुंबई एंड आई एम वर्किंग विद अ प्रोडक्शन हाउस. तो दे मैम शूट टीवी कमर्शियल्स एंड सोशल मीडिया एड्स दे मेक, मॉडलिंग, फोटोग्राफी एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू फिल्मिंग एंड स्टफ. तो उसमें वी आई वाज मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट. आई हैड अ मॉडल मैनेजर कि उनको ना रील्स बनानी थी 20-20 सेकेंड्स की. इट वाज अ बिग पैथोलॉजी लैब. तो आई कोऑर्डिनेटेड विद जो मॉडल्स को अरेंज करता है. तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट एक आई कि वी नीड दिस मेनी पीपल, 4 फीमेल्स एंड 4 मेल एंड दिस. तो एक दिन में वो रिक्वायरमेंट थी. तो उन्होंने पूरा सेटिंग कर लिया अपनी तरफ से, तो सबको इंटीमेट कर दिया कि ये है, ये टाइम है. फिर अचानक से 1-2 दिन बाद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई. तो फिर मुझे वहां कोऑर्डिनेट करना पड़ा कि भाई ये रिक्वायरमेंट चेंज हो गई. नाउ ही इज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड कि क्या ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, वॉलेटिलिटी क्यों है इतना. फिर वापस एक बार चेंज हुई, तो ऐसे 2 बार चेंज हुई. तो ना हैड टू मैनेज, उनको बोलना पड़ा कि सी दिस इज अ बिग ब्रांड, वी नीड टू बी हम्बल, वी कैन नॉट पुश देम अराउंड, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी हैव टू मूव, आप थोड़ा पेशेंस रखिए. तो मैं वैसे करके हैंडल किया फिर. तो इसमें होता है मतलब ऐसा, इट्स वेरी वॉलेटाइल, कुछ नक्की नहीं. Right. That is true. Actually, things are very volatile at many places. Yes, so we have to manage on our own in that situation. अभी हम कितने भी situation discuss कर लें, but when it comes to our situation ना, उस समय हमें ही सोचना है और हमें ही अपना दिमाग लगाना है. और उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला अगर आपको जानता है तो आपकी उनके माइंड में क्या इमेज है वो भी बहुत मैटर करता है. तो दैट इज हाउ साइकोलॉजिकली वी डील विद सच सिचुएशंस. Yes, मैम मुझे यहाँ पे भी ऐसा लगा कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट वी हैव टू कंप्लाई बिकॉज दे आर पेइंग अस. पर जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, जिसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, उसके माइंड में हमारी क्या इमेज जाएगी, पर उस पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं था. राइट. तब मुझे थोड़ा हेल्पलेस फील हुआ But कि क्या ultimately they करूँ. understand. Ultimately they हाँ. understand that you are also fulfilling some external parties requirement. है ना? यस मैम. Anybody else want to share? Okay. So here we are ending our event, and it gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event. Thank you so much, Ankita ma'am, for your informative speech. It really going to help us in our new journey in the corporate world. Thank you to PK School of Professional and Management Studies for giving us this opportunity. Thank you everyone for giving us few moments from your valuable time and joining us today, as I can understand that all of you are busy with your internships. So thank you very much for participating and making this event successful.
Thank you. Yes, Thank you. Bye. and yes, Mohit, you want to say something? Just thank you. It was a good Yes, event. yes, yes. Nana, it is a wonderful event.